Hi, guys, let's do the next one, which is perfect complements. All right, so let's do perfect complements first diagrammatically. Now I'm going to not repeat myself. मैंने आपको पहले काफ़ी बार बता ही दिया है कि हम इस चैप्टर में क्या क्या चार चीज़ें कर रहे हैं. इनकम ऑफ अ कर्व, इनकम कंजम्पशन कर्व, एंजल कर्व, प्राइस ऑफ अ कर्व, प्राइस कंजम्पशन कर्व एंड डिमांड कर्व डायग्रामेटिकली एज वेल एज न्यूमेरिकली. सबसे पहले डायग्रामेटिकली करते हैं इनकम कंजम्पशन कर्व या इनकम ऑफ अ कर्व. So we know in perfect complements the ICs are L-shaped. ये तो हमें पता ही है ना. So we are initially on the budget line AB. हमारा income increase करता है. We move from AB to A1, B1. Income further increase करती है. We move from A1, B1 to A2, B2. Let's superimpose our ICs here. ये मेरा perfect complement के ICs हैं. So we initially on E0, then E1, then E2. When you join all these points together, तो हमारे पास क्या आ जाता है? Income of a curve या income consumption curve. Wasn't that simple? Perfect complements is really, really simple. It's very simple. The second thing we make is the angel curve. Angel curve बनाएंगे हम x1 के साथ और हम बनाएंगे x2 के साथ. दोनों के अंदर the angel curves will be straight lines. That's perfect complements का income of a curve and angel curve. Now let us do perfect complements का price of a curve and demand curve. Price of a curve and demand curve. So what happens in a price of a curve? हमारी budget lines हम बनाते हैं पहले AB, AB1, AB2. Let's superimpose our ICs. So initially I'm on this IC, then I'm on this IC, and then I'm on this IC. My price of a curve will still be a upward sloping line. In this case, the different thing is कि जब मेरा P1 fall करता है तब तो x1 मेरा बढ़ता ही बढ़ता है. So you know P1 and x1 definitely share a relationship. When my P1 falls, my x1 does rise. But also जब मेरा P1 fall करता है तब x2 भी rise करता है. So P1 not only shares an inverse relationship with x1, P1 also shares an inverse relationship with x2. जब P1 फॉल करता है तो सिर्फ x1 ही नहीं बढ़ता, x2 भी बढ़ता है क्योंकि perfect complements are always consumed in a certain proportion and that proportion always has to be maintained. ठीक है? So this is my price of a curve and income of a curve. Let's look at it numerically speaking. अच्छा, I want to now introduce another element in angel curve जो मैंने पहले डिस्कस नहीं किया था, लेकिन ये वाला एलिमेंट आपके पीछे वाले जो हमने कॉप-डगलस और परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स है उनके लिए भी वैलिड है. द रीजन मैंने पहले नहीं इंट्रोड्यूस किया था बिकॉज आई डिडंट वांट टू कंफ्यूज यू विद टू मच इन्फॉर्मेशन, लेकिन अब आपको perfect substitutes and Cobb-Douglas वैसे भी समझ आ गए. Plus also you've gotten the hang of POC and IOCs, so I want to introduce that element. ठीक है? Let's just stay. I'll tell you where it is. Okay? So U is equal to minimum of x1 comma 2x2, right? Subject to P1 x1 plus P2 x2 is equal to m. इसमें से हम निकालेंगे angel curve, demand curve and slope. We know it's a perfect complement, so equilibrium will be always at the kink, which means x1 is equal to 2x2 is my condition. So can I write P1 x1 plus, actually instead of x1 can I write 2x2 plus P2 x2 is equal to m. So m is nothing but, x2 is nothing but m upon 2p1 plus p2. 2p1 plus p2 and x1 is 2m upon 2p1 plus p2, right? x2 is equal to m upon 2p1 plus p2 and x1 is equal to 2m upon 2p1 plus p2. So now when I want to find out the angel curve ka slope, you see angel curve is actually drawn as m with respect to x1. So the ideal slope of angel curve should not be del x1 upon del m. No, it should be del m upon del x1.
it should be del m upon del x1. अभी तक मैंने आपको जो कैलकुलेट कराया है वो del x1 upon del m कराया है, बट डजंट मैटर, अगर आपको ये निकालना आता है आप उसको रिवर्स कर दोगे तो स्लोप आ जाएगा ना. द रीजन आई वांटेड, लाइक आई सेड, आई डिडंट वांट टू इंट्रोड्यूस इट अर्लियर इज क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत सारी नई चीजें कर रहे थे. आई डिडंट वांट टू ऐड अनदर एलिमेंट टू इट. ठीक है, सो जो भी आपने किया है वो एब्सोल्युटली करेक्ट है. द ओनली थिंग नाउ यू नीड टू डू इज for you to write in the exam the exact slope, you need to reverse it. You need to reverse it. तो मैं क्या करूँगी, मैं अभी भी del x2 upon del m निकालूंगी. Del x2 upon del m is 1 upon 2p1 sorry plus p2, and then I'll write slope of angel curve is 2p1 plus p2. What did I do? I just reversed it, right? Let's find out the slope of demand curve. So demand curve का slope भी actually ideally should be del p1 by del x1. हम del x1 by del p1 निकालते आए हैं, उसको reverse कर दो. So let's find out del x2 by del p2. इससे आप निकाल सकते हो और उसको आप reverse कर दोगे. That will be the slope of the demand curve. So I hope it makes sense. I didn't introduce a new thing. I just added one more thing. So यहाँ ये वाली जो चीज़ आप निकालते आए हो उसको आप reverse कर दोगे तो आपका actual slope आ जाएगा. This is the reverse of the slope. We actually calculate this only. We just reverse it around to find out the slope. All right, and you have to do the same thing for perfect substitution Cobb Douglas also, जो हमने इससे पहले करे हैं. So with this video हम लोगों ने क्या क्या कर लिया है? We have done the basics of demand curve. We have done the perfect substitutes, which was an important one क्योंकि थोड़ा complicated था. Perfect complement बहुत simple है, and we'll keep continuing these functions in the next few videos. All right, thank you.